पोस्ट कर दे पिक्चर Wait, I make you the perfect photo. Oh my God. कर दिए तो? चले. Juicy. Look, without it, is this the idea? Boy. My gender in Marathi is just equivalent to me trying to speak Latin. Because ऐसा ही करना पड़ेगा. स्कूल में अभी कोई ऐसे हम लोग को इसमें कोई वाला होगा. कहीं नहीं लोग मेरे को पता है ना न्यू देखो कौन सा अच्छा लग रहा है. वो कल का भी नहीं था भाई. अरे नहीं, it's not necessary कि कल का ही हो. फोटो ना डाल दे. देखो मेरी दोस्त मला तर मी तुला गाणं माहिती. तुला पाहिजेत का? नाही. छान पण नाही दिसते. कि बढ़िया फोटो डालने necessary. Yes. मैं पर ढंग का फोटो आईना पोस्ट करूँगा. कितनी छान है पिक्चर. Asian reflection. राहुल. कौन-सी पिक्चर बनाया मुझे आवड़ता. अच्छा. यार कितनी प्रिटी है. नंबर है. तुझ्याकडे आहे ना बनला त्याच्यासोबत तुझी आईचा नंबर दे फक्त. हाय हाय हॅलो. टोकर तेरे शॉर्ट्स में ना तेरे को टॉक करना पड़ेगा. I'll sit down real quick so that you don't notice. Let's talk. हे पण हे बघा. That's my cousin. उसकी वीडियो में आना है. कितनी क्यूट है पिक्चर. पोस्ट कर देना. ये वाली है ये वाली. कौन सी देखो ज्यादा पसंद है. इन सब में से जो पिक्चर पसंद है बता. भाई तू सारी पिक्चर्स में सुंदर तो लगेगी. मैं इसकी पोस्ट बना रही हूँ. इसका फोटो डालूँ. एक दो Pinterest से उठा कर होगा. भाई इतनी भी बेचारी नहीं है. देखो कोई. हाँ. Which one? वो सही से वही तो उसकी उम्मीद नहीं है. Actually मेरी उम्मीद से पकड़ी है पता. मुझे इसकी रिंग था. ये मेरी सबसे पतली है. कुछ ही तेरा हाथ सेक्सी है. मेरे तेरा है. भाई this is the cutest video. ज़्यादा तो उसे मेरा स्कूल पढ़ाया है उसको. हाँ उसे पूछती कौन. अरे भाई तुम लोग जय को ऐसे मार डालोगे ना. किसने मैं करके बोला. किसने. नहीं she said I'm not that cool. You're just like talking. हाँ तो पूछ रहा तेरा लगा रहा है. तो ऐसे ही बहुत बात. एक्चुअली उसको पता है. कौन सा पता है तेरा. जानना है कुछ लिस्ट है. चिड़ा है. भाई क्यों लगी. मैंने सारी 14 तो रेडी
1400. Sorry, now 1400. इसका लिखा है आगे यार. तेरा भाई है cousin है. पेल नहीं मैं तेरे को अच्छा लगता है क्या? तेरे को वो चाहिए? नहीं चाहिए. ये तो उसके जैसे लगता है इसके एक्स की तरह. ये नहीं पेल दूंगी मैं तेरे को. इससे थोड़ा तो अच्छा. उसके बाल अच्छे पता है वो एस्थेटिक वाले मेरे एक्स के बाल ऐसे. उसने स्ट्रैप सेव कर ली. क्यों आईडी शर्म तेरे चाहिए वो तो आईडी दे दी. नहीं I like this photo डाल. तुला आवडतं का? पोस्ट करो. भाई 2-3 फोटो में बाकी तो फीमेल वर्जन जो उनका भी डाल दे. हाँ बेल हाँ लड़की लगेगी. ओके डन. थोड़ा ऐसे तेरे बाल ऐसे ही ना मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ग्रीसी क्यों हो रहे हैं. अरे तेरे को नहीं मानता. मेरे बाल मेरी कुत्ती लगी. अरे बैठो. तेरे को मेरी बर्थडे का को कोई कुछ नहीं करता. वेट नहीं. हाय मेरे को पूरा विंटेज लेटर मिला था पता है क्या वो विंटेज लेटर. ये कैसा है क्या मेरे को बताओ. ये पूरा ब्लर्ड है वो. कैसा देख है. I would like to be married with that ring. You know what I mean. कैसे मुझे इससे रियल लगा सही है. सेंटर से वो सेंटर क्यों मुझे साइड कंफर्टेबल लगता है सेंटर पे. और ये मेरा लेफ्टी हैंड है ना शो ऑफ कर रही है. मेरे को नहीं अच्छा लगता इसलिए सेंटर को मिडिल कर दीजिए जैसे ये सिंबल की जैसे ये डाल दिया. ओके ठीक है. मैं हरे से चलेगी. My hair is so cute. We're putting this. Yes. मैं शर्माती रोज लगा के काजल सुरमा लाई. मतलब वो इंग्लिश में आता है. धन्यवाद क्यों? सबसे बढ़िया है जो है. अच्छा मैं खुद से हेलो. Good evening. How was your exam? We don't have exams right now. No, yesterday's exam. You had some exam, na? Yeah, Chemistry. Hindi and English. English. Chemistry was not there No. yesterday. So Hindi and English went well, Yes. right? मैं हिंदी के पर साथ में हो रहा था. पेन के साथ पीछे पास करना What's calling me? ये टास्क कैसे आगे कुछ करना है. नहीं टास्क नहीं करना. आदित्य तूने साइन किया. मेरे पास
आप बना दिया Okay, let us see this. The second part is today is what we are going to learn is ions and radicals, or ions or radicals. So what are ions or radicals? Ions or radicals are basically what charged atoms. Okay, what is the meaning of charged atom? Atoms having either positive charge or negative charge. How? Atoms, what they do, they tend to lose. I mean, either they are charged atoms or group of atoms. They get due to what? Either due to loss or gain of electrons. So whenever an atom loses electron, it becomes an ion. Okay? This is something called sodium. So sodium loses one electron and becomes what? Sodium ion. Okay? तो ये atom हो गया. तुम बोलोगे सर इसमें difference क्या है? इसमें difference protons are actually what same. In a कोई भी atom या ion में protons are same, but electrons are different. Means why? Because here there are 11 protons. Because you know very well, the atom consists of same number of protons and electrons. Okay? Since they are containing same number of protons and electrons, therefore the charge on an atom is 0. And what is 0? 0 is a we can say for example neutral number. 0 एक neutral number. तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो 11 प्रोटॉन है तो सेम ही रहेंगे, पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10. Where is our other boy? That boy, iron everywhere. क्या नाम है उसका? अनुराग ना? चलो नो प्रॉब्लम, आएंगे वो. 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा? +1. Yes or no? +1 चार्ज हो गया कि नहीं? क्यों? प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. You understand? Yes. तो यहाँ पे +1 हो गया, दैट मींस इसीलिए उसके ऊपर +1 चार्ज लग गया. वैसे क्लोरीन अगर देखोगे, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है. It requires 1 electron to actually what complete its octet. ठीक है? What is the meaning of it? Why this gains? Because I told you last time, atom which is having, for example, 5, 6 or 7 electrons in outermost shell, it will tend to gain. Whereas atoms which are having 1, 2 and 3 electrons, they will lose. Why? Because to acquire 8 electrons is better to lose rather than what? Gaining 7, 6 and 5. Rather than what? Here, losing 5, 6 and 7 or gaining 3, 2 and 1, that is much easier. Yes or no? Last time बताया था तुम्हारे को, 2 friends की कहानी. उसमें एक स्टूडेंट के पास 1 रुपया था और दूसरे के पास कितना? 7 रुपया था. If you remember. Okay? So उसमें जो जिसके पास 7 रुपया था वो क्या करता है? ये जिसके पास 1 रुपया वो क्या करता है? दूसरे को दे देता है. जैसे क्लोरीन के पास 7 रुपया और सोडियम के पास 1 ही है, तो better to lose and chlorine will gain. Why? Because it is easier for chlorine which is having 7 electrons to gain rather than sodium what? Gaining 7 electrons. जिसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है. Therefore what? ये lose करेगा, ये gain करेगा. तो metals, इसको metal बोलेंगे, इसको non metal बोलेंगे. Metals always lose electrons, non metals always gain. Metals normally have very few electrons in the outermost shell. Non metals they have more number of electrons. ये difference है. ठीक है? तो ये negatively charge है. इसमें क्या होता है? 17 प्रोटॉन्स है क्लोरीन के पास और उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स भी है. तो +17 -17 कितना हो जाएगा? 0. पर अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 17 प्रोटॉन्स और 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, गेन करने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा. तो +17 -18 कितना हो जाएगा? -1.
तो जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहे हैं लूज कर रहे हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज. सो देयर आर टू काइंड ऑफ आयंस, कैटायंस एंड एनायंस. ठीक है ना. जैसे कैटायंस में अगर एक एटम लूज कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन तो इट्स अ मोनोवैलेंट रेडिकल और मोनोवैलेंट कैटायन. जैसे सोडियम है मोनोवैलेंट, लिथियम प्लस देयर इज L प्लस पोटेशियम, here is K plus Q plus Cu plus. Divalent, these elements have lost 2 electrons and become what ions? Ca plus 2. ठीक है. Ca plus 2 देखो, magnesium Mg plus 2. This is nickel plus 2, ferrous plus 2. वैसे यहाँ पे trivalent भी है. That means they can lose 3 electrons also. Maximum 3 electrons तो lose कर सकते हैं. ठीक है. जैसे एल्यूमिनियम आयन हो गया. ओके. क्रोमियम आयन हो गया. ये सब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. राइट. तो इसमें क्या होता है? Now my friend, where were you? You were missing you last time. Yeah, we missed you last time. Where were you? कहाँ चले गए? लास्ट लेक्चर में तुम प्रेजेंट थे? नहीं प्रेजेंट थे. लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट. लास्ट मंडे किधर थे तुम? तब मेरा एग्जाम चल रहा. अच्छा एग्जाम चल रहा था. बैठो पानी पियो. अब सुनो ये समझ में है? हाँ. You are a new student? Huh? You were there last time? No, I was actually absent. She had her exams. Huh? She too had her exams. Couple of lectures you were absent, I think. Yeah. That's what. So like, okay. Now anyway, now just in this part. तो यहाँ पे देखो ये सब ions है, ठीक है? Positively charged. अब वैसे negatively charged ions are called as what? They are negative. So anions बोलो, ठीक है? इसमें भी monovalent radical. मोनोवैलेंट में जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस. ओके. तो ये देखो ये सब ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया. जस्ट आई एम टेलिंग यू सिंपल एग्जांपल. डाइवैलेंट में कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऑक्साइड है. ठीक है. ट्राइवैलेंट में कौन सा होगा? नाइट्राइड, N3 माइनस. So it's the second you have written. Oxide, divalent. No. Under Anions, monovalent, Br minus. ठीक है. अब इसमें एक important चीज है. Now these are all atoms only. What about group of atoms? Group of atoms में क्या होता है कि for example there are group of atoms means group of elements. Okay. So for example, if I write this one, this is hydroxide ion. It's a group of 2 atoms. Okay, sometimes you go picnic alone. Here, sometimes you go with your friend. Sometimes one friend goes with what? 4 together. And that means what? 5 together totally. And therefore, what is the charge? Sulfate ion. Nitrate, ये देखो NO3 minus. These group of atoms are called as what? Which are containing more than 2 are called as polyatomic radical. Polyatomic radicals are those radicals or those ions which are having more than 2 elements or 2 atoms in that, for example, group. ये देखो OH minus, SO4 minus. What is इसको क्या बोलते हैं? Hydroxide. इसको क्या बोलते हैं? Sulfate. इसको nitrate. Okay. Then we are having, of course, for example, bicarbonate. ये देखो बहुत सारे examples हैं. Bicarbonate. Then carbonate. Okay. Then we are having, for example, let us say sulfate. Sulfate दे दिया ना, bisulfate ले लो. Okay, sulfide ले लो, S2 minus. Now this is only containing only 1. Okay, so ये multi kind of, like as we take multivitamin tablets, ये multi kind of elements or atoms are there of those elements. तो इसको बोलते हैं, for example, polyatomic radical. इसको नहीं. Okay, ये तो इसमें आ जाएगा S2 minus. ऐसा करके एक टेबल दिया आपके बुक में. Okay, सब लोग वो टेबल एक बार ध्यान से पढ़ेंगे. ठीक है. Just on that, open that table. Where is the table? पूरा स्टार्टिंग से देखिए. देखा आपने? Have you signed? Kathleen, आपने साइन किया? नहीं किया. कीजिए मजे से कीजिए. Okay? सब लोग देखिए यहाँ पे. अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है. वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स. I have given you some few examples over here. ठीक है. पहले ये लिख लो सब लोग. थोड़ा ये लिख लो. And then we'll start reading the concept.
Then what we'll do? Sanjit is come, na? Yes. The next one is what? Anurag? Yes. Ritika? Aditi? Aditi. Then Akshara is absent? Yes. कहाँ गए वो? She has classes. Okay. Vidyansha? Absent. आज absent हो. Manasvi? Then Pushpaja? Present, sir. Right. Siddhi? Present, sir. Janice not enrolled. Adelaide, right? ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये लिखा सबने? Okay, so let us start reading the concept of radicals. पहले ये radicals का concept देख लेते सब लोग. What is an ion? सबने लिखा सब. All of you have written. हाँ, रितिका पढ़िए. Yes. What is an ion? Compounds composed of metals and non-metals contain charged species. The charged species are known as ions. An ion is a charged particle and can be negatively or positively charged. A negatively charged ion is called an anion. The positively charged ion, cation, take for example sodium chloride, NaCl. Its constituent particles are positively charged. Sodium ions, Na+, are negatively charged. Chloride ions, Cl ions, may consist of a single charged atom or a group of atoms that have a net charge on them. A group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ion or a radical. बस एक मिनट. Thank you. Now just ये जो charge है, ये net charge है. इन लोगों को मिला के दोनों का जो charge बनता है वो माइनस. ठीक है ना? अब इसमें याद रखना है कि जितना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है एटम, ये एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1. So the electrons which are lost by an atom is termed as what? Valency of that element. So valency is the number of electrons which an atom donates, ठीक है, or accepts or shares. Sharing means वो और एक type का bonding है. So the number of electrons donates or accept or shares, okay, by the other atom to attain a kind of stability is called as valency. तो अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1. क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1. दैट मींस व्हाटएवर चार्ज यू आर गेटिंग दैट इज मोनोवैलेंट. सो अगर एक पॉजिटिव चार्ज ही आपको दिख रहा है ऊपर, दैट मींस इट इज अ मोनोवैलेंट एलिमेंट. अगर दो चार्ज दिख रहा है, +2 चार्ज हो गई, इट्स अ डाइवैलेंट एलिमेंट. यानी इसका वैलेंसी 2 है. इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए. अगर उसके ऊपर 3+ है या +3 है, then it's a trivalent element. यानी इसका वैलेंसी 3 है. It has lost 3 electrons. अगर वो 4 होगा, suppose 4 electrons है, very much rare, but अगर 4 electrons lose किया तो उसका वैलेंसी 4 हो जाएगा. Okay? मोनोवैलेंट. जैसे यहाँ पे देखो क्लोरीन ने गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन, तो जो भी माइनस चार्ज यहाँ पे है, जितने भी माइनस चार्ज है, like -1 है, means we don't write that 1 over here. Okay? Just minus charge means what? It is valency is 1. Divalent में ऑक्सीजन का वैलेंसी यहाँ पे 2 हो गया. ऑक्साइड, सल्फाइड, it is H2 minus. That means what is happening over here? Whenever they are single and there is no ion, the ending will be what? ITE. But when you are having a group of atoms, ठीक है? And suppose for example यहाँ पे अगर suppose for example if you are having SO3 minus, तो जब ग्रुप ऑफ एटम जब सल्फर के साथ है तो उसको क्या बोलेंगे? सल्फाइड. ITE. यहाँ पे क्या है? ITE. ये डैडी का T याद रखिए, और ये टाइगर का T. यस और नो? ठीक है? तो डैडी का T क्यों है? क्योंकि ITE यानी सिंगल एटम जब रहेगा, ऑक्साइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, इसको क्लोरीन आयन नहीं बोलना है, इसको क्लोराइड आयन बोलना है. क्लोरीन का INE कैंसिल करके ITE डालना है. ठीक है? इसका क्या हो जाएगा? बाइसल्फेट. Now whenever we are having more number of oxygen atoms, then it is ATE.
राइट? यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन एटम्स, जब भी फॉर एग्जांपल मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज देयर, इट इज 80 एंड लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन 80, तो आपको याद रखना है व्हेन द वैलेंसी इज लोअर, ठीक है, लोअर वैलेंसी, एक मिनट ध्यान रखना है, लोअर वैलेंसी इज व्हाट, ending will be ROUS, OUS, us, रस, अस ऐसे करके है उस, ठीक है, पर अगर हायर वैलेंसी है तो IC आ जाएगा, ATE आ जाएगा, यहाँ पे ITE आ जाएगा सॉल्ट में, remember? So what is important over here when you are writing the reaction or when you are writing the name of the compound or the name of the radical, okay? What is important over here? ये सब ending आपको जैसे जैसे नाम आएगा I will tell you, okay? Now just see on page number, for example 51, right? Page number 51. At least you will read. Wait. Anurag, you will read valency, okay? Edlin will read name of the ion, and Jitnyasha is there, absent, ठीक है? Manaswi, you will read what? Simple. Nah, simple. चलो, पढ़िए. Page number 51. 1. क्या बोल? Valency. Valency हाँ ऐसे पढ़िए. हाँ बोलिए. Now, name of ion: sodium, potassium, silver, and copper. नहीं. हाँ चलो ठीक है. Then copper 1. एक ही साथ पढ़ लो क्या? एक ही साथ मत पढ़ो. पहले वो सोडियम Na पढ़ो. Sodium. हाँ. Na plus. Potassium. K plus. Silver. Ag plus. Yeah, copper 1. Cu plus. Then next one. वही valency. Valency 2. नहीं. उधर अच्छा valency 2 बोल रहे हो क्या? चलो ठीक है. Valency 2. Magnesium. Mg2 plus. Potassium. Ca2 plus. Yes. Zinc. Zn2 plus. Yes. Rn2. Iron 2 क्या हो जाएगा? Fe2 plus. 2 plus. Copper Okay. 2. Cu2 plus. अनुराग बोलिए. Valency 3. Aluminium. Yes. Al3 plus. Hmm. That is about it. Yes. Now come on. Ritika. Yes, sir. Then who else? Aditi and Anurag will read out. Okay. And along with that, who else will be there? Manaswi. Okay. क्या करेंगे आप? 4 columns है इसमें. ठीक है? One will read out the name of that particular the non-metallic element. I do Then that. symbol. अच्छा, you will do that. Then symbol कौन पढ़ेगा? Sun. Aditi, and then polyatomic ion कौन पढ़ेगा? हाँ चलो. And then you will read valency also ना? Yeah. Okay. And You read symbol and valency, sir. हाँ symbol and valency पढ़िए. चलिए ठीक है. I'll start. First. Hydrogen ion. Sorry, H plus. Ammonia. Symbol H plus. You're reading last वाला symbol. Last अच्छा. तुम last वाला पढ़ोगे हाँ. Hydride. H minus. Hydroxide. OH minus. Chloride. अरे अमोनियम किधर चला गया? NH4 plus. Ammonium बोला already. बोल दिया ना? हाँ चलो good. Then Chloride. Ci की Cl है. Cl है. Cl minus. Cl minus. Nitrate. NO3 minus. Yes. Bromide. Br minus. Hydrogen carbonate. HCl3 minus. HCO3 minus. Yes. Iodide. L minus. I I minus. minus. I minus. Valency 2. Depend. Valency 2 पढ़िए. Oxide. O2 minus. Carbonate. CO 2/3. CO2 2 by 3 नहीं है. 2/3 किधर है? CO3 2 minus. Yeah, CO3 2 minus. CO3 2 minus. 2 minus ऊपर है ना? CO3 2 minus ऐसा पढ़ना है. चलो then Sulfide. sulfide. SO3 2 minus. पहले इसको पढ़ना है नीचे सबस्क्रिप्ट जो है उसको SO3 2 minus. ये देखो
SO3 2 Sir, I read sulfide, not sulfide. सल्फाइड टाइगर का T पढ़ा था आपने Sulfide. हाँ सल्फाइड S ओके S -2 वेरी गुड then सल्फाइड कौन पढ़ा Sulfide. सल्फाइड आपने पढ़ा हाँ सल्फाइड टाइगर का T डैडी का T क्या रहेगा याद रखना तो एक ही एलिमेंट है और अगर टाइगर का T है तो इट इज सल्फाइड इन अ ग्रुप ऑफ एटम्स चलो देन Sulfate. SO4 2 minus. वेरी गुड Nitrite. N3 minus. वेरी गुड Phosphate, sorry, phosphate. PO4 PO4 3 minus. यस अब सब लोग क्या करेंगे टैबुलर कॉलम बना के बिना देख के सिंबल आपको लिखना है ठीक है अगर नहीं है याद नहीं है नहीं पहले याद कर लो 5 मिनट और उसके बाद दिमाग रखो बिकॉज़ ये केमिकल फॉर्मूला उसके बाद इजी पढ़ना चलो स्टार्ट Sir, which one? कौन सा? पेज नंबर 51 पे नहीं, कॉपी sir, है उसमें भी column. सब ऑल द कॉलम हां ऐसे ये देखो कैसे सब नाम लिखिए ठीक है उसका टाइटल लिख दो ठीक है और उसके बाद टाइटल लिखने के बाद सब ब्लैंक छोड़ो यहाँ पे ये कॉलम लेट अस सी Non-metallic. non-metallic as well as metallic element ठीक है and then So do you write the name of iron or like name of the ion also you see and write but only symbol you are not supposed to write without with seeing by seeing you have to write without seeing So polyatomic also. yes चलो स्टार्ट करें इसी चल रहा है कि बंद है They understand the symbols in the last row. जो लास्ट वाला कौन सा था फॉस्फेट ना The last row का symbol. हाँ ये देखो PO4 3 minus phosphate PO4 this is a polyatomic radical इसमें 1 phosphorus 4 ऑक्सीजन और नेट चार्ज कितना है -3 सल्फेट SO4 2 minus इसको ये सब रेडिकल्स है ना it's a group of radicals which are actually what formed by the net charge on these two मिला के is S2 minus ये देखो ये वैलेंसी ठीक है इन लोगों का नाम खाली मैं याद बहुत ही confused हो गया क्या मैं हाँ बोलो क्या उसमें कंफ्यूजन है कुछ भी नहीं समझा ओके देखो क्या होता है यू केम लेट आई थिंक सो क्या yes sir हाँ तो सुनो when an atom like for example see what is happening over here last time you were absent ना तो इसलिए तुमको मालूम नहीं जैसे देखो I gave you that example that one for example inert gases like helium neon argon krypton xenon and radon ये जो 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 इन लोगों का स्टेबिलिटी इज बिकॉज़ ऑफ व्हाट दे आर हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell and helium is having how many electrons in outermost shell so 2 electrons in the first shell that is itself is the last shell means stability duplet or 8 electrons in the outermost shell means again stability Octet. right octet yes very good now but ये जो एलिमेंट्स है सोडियम ओके उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 281 इट हैज गॉट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए सो विल इट बी पॉसिबल फॉर दिस एलिमेंट टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स नो व्हाई सो व्हाट इट विल डू इट विल लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन व्हाई बिकॉज़ आफ्टर लूजिंग उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे 8 क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने उसके पास 8 आउटरमोस्ट शेल में हो जाएंगे दैट मींस इट विल एक्वायर व्हाट inert gas configuration of neon and if neon is stable means sodium ion is stable so this is sodium ion ये ion हो गया so after losing that electron atom becomes a charged particle likewise a chlorine है chlorine के पास 7 इलेक्ट्रॉन so अनुराग 7 इलेक्ट्रॉन means what उसको easier पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करना क्यों क्योंकि it is difficult to lose 7 electrons तो वो गेन करेगा become negatively जो गेनर है वो नेगेटिवली चार्ज आयन बनेगा और जो लूजर है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा बिकॉज़ इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं सोडियम में कितने प्रोटॉन्स है 11 प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स है 11 और इसने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसका प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 11 और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 10 ना तो नेट चार्ज इज हाउ मच +11 -10 +1 और यहाँ पे 2x लूज करेगा जो लूज करेगा उसको पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा
ओके, और जो गेन करेगा नेगेटिव है उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। हाँ और ये इधर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। ओके, like every person is having negative points and positive points, right? तो नेगेटिव पॉइंट जितना कम होगा अपना सिस्टम में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा हो जाएगा ना, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन जितना बाहर भेज देंगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज, सो दीस आर कॉल्ड कैटायंस एंड दीस आर कॉल्ड एनायंस। कैटायंस मींस पॉजिटिवली चार्ज आयन, एनायंस मींस नेगेटिवली। लाइकवाइज there are group of atoms when they combine by loss or gain of electrons, the net charge on that ion, okay, which is separately. When the two atoms, for example, after clubbing up, okay, whatever electrons they have lost or gained, so the net charge which they have actually what lost or gained together, when we add, that charge is over here. This is a net charge of that radical. This is called a radical. Group of atoms are called as radicals. Okay, and only one atom is called as an ion, one charge atom. So ion and radicals are same only. Only thing is the group of atoms having charge. More than one atom, that's a radical. Yes, yes. It's a polyatomic radical. ठीक है? ऐसा करके तुमको ये अपना बाय हार्ट करके लिखना है। ओके, चलो लिखो। All of you first write without seeing. Means जितना आता है पहले वो लिख लीजिए। Now start writing the formula. जो नहीं आ रहा है उसको देखो, और जो देख के लिख रहे हो उसको 10-10 बार फिर से लिखना है। Good. So the radical of polyatomic ion. Yes.
You done, all of you? हो गया सबका? जो नहीं आ रहा है आराम से देख लीजिए. First time थोड़ा सा नहीं आएगा, nothing to worry. घर में जाके ये कह रहे, now you better to write, see and write rather than writing wrongly without seeing. ठीक है? So let us start working on this sodium chloride. And now let us come to, ठीक है, writing the chemical formula. How to write the chemical formula of simple compounds? Okay? Now it's like, for example, our name. Some people they ask, what is the name? And immediately, sir, my name is Sachin. Sachin what? Then he says, Sachin Tendulkar. Now, what is the meaning of this? Sachin Tendulkar is the full name of that particular person. So, likewise, a compound is a combination of a cation and anion. When I say ionic compounds, you know, इसमें दो ions रहेंगे. Ions एक positive रहेगा और दूसरा negative रहेगा. So, you have to write down the chart. हाँ, नहीं चार्ट लिखने की जरूरत नहीं है. Just tell. So, अब ये चार्ट हम लोग को, for example, Sachin Tendulkar. So, Sachin is like a positive ion over here. And Tendulkar is a negative, and then only the compound is complete. Okay? Like for example, the positive and negative parts are a part of the compound. Because after losing, then only the other person will gain. Right now? So when the two particles are combining, so एक lose करेगा और दूसरा gain करेगा, तभी तो एक stability आएगा. Right? Like for example, when you are losing, when an atom is losing one electron, the other atom is gaining, there is a bond formation. Bond formation means a compound बनता है वहाँ पे, ठीक है ना? Okay. Now, what is important over here? So यहाँ पे same way, if I want to write the name, write the chemical formula of simple compound which are ionic in nature. हो गया आपका? Over. आराम से लिखिए. Now सुनो, सोडियम क्लोराइड का अगर कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है, तो हम लोग को चार्ट से देख सकते हैं. What is the sodium ion का, for example, formula? Sodium ion, okay, Na plus. Then what about the Cl minus? ये तो मैंने लिख के दिया जिससे कि आपको इजी पड़े. Okay? अब देखो कैसे फॉर्मूला लिखना है. सोडियम का you write the symbol in the form of ion. इसके ऊपर वैलेंसी कितना है? 1. वैलेंसी 1 है. जो +1 चार्ज में वैलेंसी 1. ठीक है? क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है? Cl माइनस. इसका भी वैलेंसी 1. यानी जो अगर वैलेंसी इक्वल है, then directly you write that formula as it is. NaCl. यानी एक टीचर के पास एक चॉकलेट था, वो एक स्टूडेंट को दे दी. क्यों? तो एक ही स्टूडेंट आ पाया. क्यों? क्योंकि टीचर ने के पास एक ही चॉकलेट है और स्टूडेंट का कैपेसिटी एक ही चॉकलेट गेन करने का. बट सपोज फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा सर मैग्नीशियम क्लोराइड लिखिए. नो, मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड. नाउ व्हाट इज द सिंबल फॉर मैग्नीशियम? मैग्नीशियम का सिंबल यहाँ पे कहाँ पे है? ये देखिए, Mg2+. Yes. I've just given for your reference to that understand कि कोई कंपाउंड अगर बना है सचिन तेंदुलकर, ये सचिन का पार्ट है और ये तेंदुलकर का पार्ट. The structure of that name will be complete for the human being. Okay? Only when you write only magnesium and incomplete. Sir Sachin. Or only you write chloride and incomplete. Tendulkar. What Tendulkar? Sachin Tendulkar. Right? यहाँ पे हम लोग magnesium लिख रहे हैं. Both are compensating for each other. ठीक है? Now magnesium का सिंबल क्या है? Mg2+. क्लोराइड का सिंबल क्या है? -1. ना इसका वैलेंसी क्या है? ऊपर जो नंबर दिया उसको ही नीचे इधर 1 है. Yes or no? अब वैलेंसी अनइक्वल है. Is 2 equal to 1? No. That means अगर एक टीचर के पास 2 चॉकलेट है और एक स्टूडेंट का कैपेसिटी एक ही चॉकलेट खाने का है, तो how many students should be called so that both the chocolate will be consumed? 2. तो 2 स्टूडेंट आएंगे. That means इसके लिए कैसे करना है? Criss cross. Criss cross means one teacher having 2 chocolates will give to 2 students, and each one will take what? 1 chocolate. ऐसे सोचो. That what is the formula? MgCl.
Cl2 ये देखो, ये जो 2 है इसके नीचे आ जाएगा, यानी ये नंबर को आप हटा दीजिए, इसके ऊपर जो चार्ज है वो हटा दीजिए, खाली ये इसको नीचे लिख दीजिए। पर इधर 1 क्यों नहीं लिख रहे? because 1 is understood that it is 1. Okay, वैसे अगर suppose if somebody wants to know aluminum chloride, now you only tell me aluminum chloride का क्या फॉर्मूला होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम कहाँ पे है? एल्यूमिनियम कहाँ पे दिख रहा है? हाँ ये देखो, इसका वैलेंसी 3 है, इस बार टीचर के पास 3 चॉकलेट है, लाइक कैपेसिटी टू लूज, तो एल्यूमिनियम के लाइक टीचर इज लाइक फर्स्ट एल्यूमिनियम है, ठीक है, एंड शी इज हैविंग फॉर एग्जांपल क्लोराइड है ना, तो क्लोराइड क्या हो जाएगा? Cl माइनस, यस और नो? -1, दैट मींस इसका वैलेंसी 3 है, इसका वैलेंसी 1 है। Teacher is having 3 chocolates and she can give or he can give for example those 3 chocolates to only, I mean one student has got capacity to have only 1, so that means how many students will be called? 3. तो हम लोग क्या गिने? Why I am giving you this example? आपको सिर्फ क्रिस क्रॉस करना है, ये नंबर को इसके नीचे आएगा, ये नंबर इसके नीचे आएगा, क्या फॉर्मूला है? यस, सिंपल। अब तो सपोज को बोलेगा सर मैग्नीशियम सल्फेट का लिखिए, अब मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? ये देखो, मैग्नीशियम आयन का सिंबल क्या है? Mg+2, सेम, मैग्नीशियम चेंज नहीं होगा, याद रखिए। सल्फेट का भी हम लोग नया ले रहे हैं, सल्फेट वेयर इज इट? यस, दिस वन, SO42-, तो क्या हो जाएगा? SO42-। तो ऊपर देखिए चार्ज, दोनों का वैलेंसी क्या है? सेम है ना? तो वैलेंसी सेम इज व्हाट? डायरेक्ट वैलेंसी सेम, नो नीड टू क्रिस क्रॉस, डायरेक्टली राइट द फॉर्मूला। व्हाट इज दैट? टीचर के पास 2 चॉकलेट है और एक स्टूडेंट कैपेसिटी रख रहे हैं 2 चॉकलेट खाने का, तो डायरेक्टली उसमें एमजीएस। सर तो वो ब्रैकेट का होता है? हाँ ब्रैकेट, वही बता रहा हूँ, पहले ये सिंपल समझ में आया। नाउ सपोज कोई बोलेगा सर आई एम हैविंग फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम सल्फेट, ये वाला कंपाउंड देखिए, ये देखिए, ये कंपाउंड एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, एल्यूमिनियम का क्या सिंबल है आदिति? Al+3। सल्फेट का क्या सिंबल है? SO42-। वैलेंसी इसका कितना है? 3, इसका कितना है? 2। आराम से सो जाओ ना, सुनो इधर देखो, यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगा? 2 इसके नीचे और 3 इसके नीचे। Now when the group of radicals, group of atoms are there, Al2 of a bracket डालिए, क्योंकि इसके पास भी नंबर नीचे लिखा है, it should not, तो ब्रैकेट डाल के then you put that, insert that radical, full radical, and then you write this number 3, yes, ये indicate करता है 3 sulfate ions are combining with 2 aluminum ions. In other words, 2 aluminum ions are actually what? 1 aluminum ion is losing 3 electrons, so 2 aluminum ions will lose how many electrons? 6, and 3 sulfate ions, okay, each sulfate ion gains 2 electrons, so 2 3s are 6, वैलेंसी सेटिस्फाइड, यानी जितना इधर लूज किया उतना गेन हो गया कि नहीं? तो ऐसा तुमको लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट। सपोज तुम लिखोगे अमोनियम सल्फेट, ये देखिए चिल्ड्रन, अमोनियम सल्फेट लिखो, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है, अमोनियम का सिंबल यहाँ पे नहीं दिया, मैं दे देता हूँ, अमोनियम NH-, यस, नहीं NH4+। अमोनियम के पास वैलेंसी एक ही है, तो अब ये देखो, ये कौन बोलेगा? अमोनियम NH4+, इसके ऊपर वैलेंसी 1, सल्फेट वैलेंसी 2, तो इसका वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी 2 है, तो क्या हो जाएगा? क्रिस क्रॉस। अब क्रिस क्रॉस करने के टाइम ये अमोनियम ऐसा लिखो, फिर ब्रैकेट डाल दीजिए और फिर इसका 2 नंबर बाहर लिखिए, सल्फेट में तो एक ही है, नो नीड टू पुट मेनी ब्रैकेट, अमोनियम सल्फेट, राइट? यस, व्हाई नॉट? कहाँ पे है? एसी बाहर, रिमोट नहीं ना? Just turn off the fan. हाँ, Actually, फैन on भी नहीं है। हाँ? The fan is not even on there. It's just cold. Okay, नहीं, because of that circulation ना, उधर हो गया। Okay, ये हो गया सबका? सर एक मिनट को समझना है। हाँ, समझिए। So bracket का concept, ये देखो, ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट किसमें है? जो when you are having a multi atoms, when you are having multi atoms, just to actually what, avoid any kind of confusion, you put the bracket, that particular ammonium ion in the bracket, and if any number other than 1 is there, you put outside the bracket. So is the एक बार मैं और एक एग्जांपल दूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखिए,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के ऊपर वैलेंसी क्या है +2, हाइड्रोक्सिल के ऊपर वैलेंसी क्या है 1, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा 2 और इधर 1, क्रिस क्रॉस, राइट, क्या हो जाएगा Mg, फिर OH ब्रैकेट में डाल दीजिए और फिर ये 2 इधर देखिए इधर, सर ब्रैकेट क्यों होगा अभी? क्योंकि देखो दो मल्टी एटम्स है ना, OH है ना, सब पे है ना, it's not just यानी one it's not edge. just one atom, it is group of atom, यानी उसका कोई नंबर भी नहीं है, फिर भी you have to put the bracket because is a more than one element is there, इसीलिए, ठीक है, वैलेंसी 1 है। हाँ वैलेंसी 1 है इसका, सर फिर Mg ये OH का वैलेंसी 1 है, बट इसका वैलेंसी, इसका मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, तो ये क्रिस क्रॉस करने का टाइम OH के नीचे आएगा ना 2, लेकिन हम ब्रैकेट क्यों डालें? हाँ ब्रैकेट, क्योंकि देखो ऐसा लगेगा कि ये जो 2 है सिर्फ हाइड्रोजन को बिलोंग कर रहा है, यस और नो, ये देखो इसीलिए, बिकॉज़ ये साथ में है ना, yes इसीलिए, sir because the 2 is not हाँ just जब भी one तुम्हारे height. पास सी रेडिकल्स रहेगा, लाइक ग्रुप ऑफ एटम्स, आपको ब्रैकेट डालना ही पड़ेगा, हाँ रिमेंबर, गॉट इट ना, सर वो फिर MgSO4 में क्यों नहीं होगा, क्योंकि Mg नहीं इधर देखो वैलेंसी जब सेम है तो हम लोग को ब्रैकेट डालने की जरूरत है, बिकॉज़ दोनों का वैलेंसी सेम है ना, तो वैलेंसी सेम है मींस राइट द फॉर्मूला एज इट इज, देयर इज नो नीड टू राइट 2 2 बिकॉज़ दे विल गेट कैंसल, वैलेंसी अनइक्वल होते हैं तभी ब्रैकेट। हाँ यस, वैलेंसी जब अनइक्वल होगा तब आपको क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा, जब वैलेंसी सेम है तो डायरेक्ट राइट दिस फॉर्मूला, रिमूव दीस थिंग्स एंड डायरेक्टली राइट द सेम फॉर्मूला, आई मीन इट्स लाइक द सिंबल ऑफ दैट फॉर्मूला इटसेल्फ, क्लियर। सर मैग्नीशियम क्लोराइड में भी फिर ब्रैकेट आना चाहिए ना? नहीं इसमें एक ही एटम है ना, Cl, ये Cl एक ही है, ओनली वन एलिमेंट इज देयर, सी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखो सल्फर ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट है ना, so there's a polyatomic radical, ठीक है, so let us start working on some questions based on this, पहले ये लिख लीजिए और देख जो चार्ट बना है उसको लिखिए, पहले फर्स्ट राइट द टाइटल, राइट the chemical formulas of simple compounds, इस साइड चार्ट लिख दीजिए, चार्ट इन द सेंस यू कैन रेफर एनी टाइम द, एंड और कभी भी आपको जब कंपाउंड लिख रहे हैं so always keep the chart ready in front of you. Now what is this? Sulfide, ferrous, cuprous, I'll give you some compounds, you have to write down the formula, even if it's wrong no problem, but इतना पहले कॉपी कर लीजिए इधर से, then we'll go for some formula, and 1 2 3 4 5 6 7 8 16 formula I will give you, name, okay, और तुमको उसका फॉर्मूला लिखना है, अभी फिर उल्टा करेंगे हम लोग, I'll give you the formula and you write the name, उल्टा, जिससे कि आपको दोनों तरफ से, for example there are certain clothes which we can wear from both the side, our raincoats, रेनकोट मालूम है ना, कभी आपको ब्लैक कलर रेनकोट चाहिए तो आप वो ब्लैक कलर का साइड पर पहन सकते हैं, और अगर ग्रे कलर चाहिए तो उसको उल्टा पहनिए तो ग्रे कलर मिल जाएगा, मालूम है ना आपको, देखा है, टू साइड, देयर आर सर्टेन क्लोथ्स व्हिच आर डुअल साइड नहीं है, डुअल कलर इफेक्ट, एक साइड से आप देखेंगे तो ऑरेंज दिखेगा या ग्रीन दिखेगा, दूसरे साइड ब्लू दिखेगा, पीकॉक ब्लू, कौन सा एक साड़ी आता है ना जो अलग अलग शेड दिखता है, तो वैसे यहाँ पे आपको दिखाई देगा, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू द नेम, यू राइट द फॉर्मूला, आई विल गिव यू द फॉर्मूला, यू राइट द नेम, लेट अस सी हाउ टू गो अबाउट इट, पहले ये लिख लो, तो इसी में हम लोग का टाइम स्पेंड होगा आज, क्योंकि ये आ गया तो केमिकल रिएक्शन विल बी इजियर फॉर यू, एनी डाउट्स, कुछ आपको डाउट है समझ में आया ना, रेडिकल जब रहेगा तो यू टू पुट द ब्रैकेट, एंड व्हेन इट इज नॉट, वैलेंसी इज वन ओनली, आपको ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं, लिखा आपने, सर लास्ट 3 क्या लिखिए? इसको मत लिखिए, इसको सब अपना बाद में है ना, ये अभी चार्ट में रखा है, लास्ट में लिखना है, कौन सा पहले का, तो चार्ट में कनाडा का फोटो, हाँ वही, I started writing the chart. ठीक है, चार्ट अगर लिखना है तो लिख लीजिए, हाँ लास्ट 3 क्या है? देखो डिमांडिफाइड क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरिक, डिमांडिफाइड का फोटो, नहीं नहीं टेक द फोटो, नथिंग टू दिस, बिकॉज़ स्टडीज में आपको फोटो लीजिए, उसको जेरोक्स कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसको पढ़िए
ठीक है ना कि at the end of the day you have to finally study because किसी डायरेक्शन से भी जाइए आप, ठीक है, बट आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन गेन करना है। सर देन हम लोग वो लिखेंगे अभी नहीं लास्ट का ये वाला ना, ये देखो, हाँ यू आर आस्किंग क्यूप्रस, CUPROUS, क्यूप्रिक CUPRIC, और इसमें फेरिक FERRIC, ठीक है, फेरिक। अब इसका एक स्टॉक्स, ये ना फॉर एग्जांपल दो नाम रहता है इसका, अगर आपको कॉपर लिखना है तो कॉपर 1 लिख सकते, क्यूप्रिक का कॉपर यानी वैलेंसी 2 है तो कॉपर 2 लिखना है, रोमन लेटर 2। आई टेल यू एक्सप्लेन दैट कंपाउंड का नाम आल्सो। अभी उल्टा जाते हैं हम लोग, वो चार्ट में भी था, वो चार्ट में भी था, राइट, IN2N यस, वैसे फॉर्मेट में लिखना है। So what's the one under sulfide? Which one? This one? No, ferrous Ferrous sulfate, ये वाला Yeah. FERROUS CUPROUS, ठीक है ना। फेरिक, ठीक है ना, हो गया, स्टार्ट करें। ये मैग्नीशियम सल्फेट अंडरलाइन, ये सब अपना, डोंट राइट सचिन तेंदुलकर, ये खाली अपना तुम्हारे को एक्सप्लेन किया। मैग्नीशियम, अमोनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, exam of ये topic is there this exam, no, so nothing to worry, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। So is it okay if we write -2 or 2-? हाँ, any way you can write, ठीक है, 2 minus या -2, बुक में कैसे दिया है, 2 minus दिया है कि -2, हाँ 2 minus, yes, 2 minus दिया तो 2 minus लिखिए। Some cases I have written 2 minus, some cases I have written -2, nothing to it, but you have to write as given in the book because book के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं, but meaning सेम है, ठीक है, हो गया सबका, लिख के आराम से। ये सबका लिखो आराम से। हो गया? Let us come to some compounds का मैं आपको ये भी बता देता हूँ। For example, अगर suppose formula is given, how will you write the name? अगर formula दिया है, चलो ये देखिए FeCl3, suppose ये formula दिया, ठीक है, FeCl3. Now how will you find out the valency of this element? ये देखो, इसको क्या करना है, ये 3 एक्चुअली व्हाट किसके लिए, क्रिस क्रॉस करने के टाइम आप दूर दूर लिखिए, ठीक है, तो अगर ये 3 इधर है तो इसका वैलेंसी कितना है, +3, बिकॉज़ फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज विल बी पॉजिटिवली चार्ज, सेकंड विल बी नेगेटिव, तो इसके नीचे क्या है 1 है, ये कुछ नंबर नहीं तो 1 ही है, तो इसके ऊपर वैलेंसी क्या हो जाएगा 1 माइनस। That means here if I want to write for example, that means just to understand, so that means this particular thing is Fe+3. What is Fe+3? Ferric. What is Cl-, फिर इसको ही खाली देखना है ऊपर, ये देखो ये फेरिक Fe+3, फिर Cl- दिख रहा है आपको,
यस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरिक क्लोराइड. ओके, बट अगर सपोज आपको ये फेरिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? वी नो Fe is nothing but what? Symbol for iron. आयरन, बट इसका वैलेंसी क्या है? 3. हम लोग रोमन लेटर ब्रैकेट में डालेंगे, रोमन लेटर 3. Especially for iron, see, किसके लिए? Because they are having variable valencies. What is variable valencies? Valencies in which the elements are having what? More than one valency. जैसा cuprous है. Cuprous refers to copper, right? हाँ, cuprous and cupric both refer to copper only. Copper But इसका one and valency copper 1 and copper 2. Ferrous कितना है? +2. Very lower valency always हमेशा OUS, ROUS and all those things. But higher valency is always IC. Okay. So they go iron 3 and then what? Same way chloride. Okay. Like suppose if I tell you, for example, let us say sodium nitrite लिखना है आपको. सोडियम नाइट्राइट कैसे लिखेंगे? सोडियम का वैलेंस, सोडियम का सिंबल क्या है? Na प्लस. नाइट्राइट देखिए इधर है NO2 प्लस माइनस, सॉरी, दोनों का वैलेंसी सेम है. यस और नो? तो डायरेक्टली NaNO2. अब इसी को उल्टा कर दो. You are given the valency, you are given the, for example, name formula, and you are writing the name. How will you write? Not just see this. इसके ऊपर valency क्या है? Not just see this particular sodium. Now this NO2 is nothing but what? It's not bracket, like bracket डालने की जरूरत नहीं. I'm just showing you. ये 1 है, ये भी 1 है, दोनों 1 है. Yes or no? Because ये तो इस symbol, इसका formula है NO2 minus, right? तो इसका valency कितना है? Both the elements are having valency. This is +1 and this is -1. Okay? तो यहाँ पे if it is +1 means what? इसको अलग अलग लिख दो. NO2 minus. ये देखो क्या बन रहा है आपका? Sodium nitrite. If suppose I want to write sodium nitrate, sodium nitrate क्या हो जाएगा? सोडियम का वैलेंसी 1 है, नाइट्रेट का वैलेंसी क्या है? अगेन 1 है. यस और नो? नाइट्रेट को आगे लिखा है, इधर लिखा है नाइट्रेट, राइट? सोडियम नाइट्रेट. अभी देखो सोडियम नाइट्रेट फॉर्मूला क्या है? NaNO3. Now can you tell me the last one? Because इसके बाद bisulfite. Let us say for example potassium bisulfite लिखना है. What is the symbol for potassium? K. K plus. Bisulfite HSO3 minus. ये देखो दोनों का वैलेंसी सेम है. That means what? Directly KHSO3 plus. Okay. Let us see potassium carbonate. Now if I tell you potassium carbonate का अगर फॉर्मूला आपको लिखना है, how will you write? ये देखो नाम इधर दिया है. तो potassium valency is 1 plus, right? Carbonate valency is what? 2 minus. Valencies are unequal. Crisscross. क्या मिलेगा आपको? A2 CO3. इसके नीचे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये निकाल दीजिए. Just to show you. See, A2 CO. आगे समझ में? Now there is one question in your book. Let us see that particular question. All of you, ठीक है? कहाँ पे क्वेश्चन? लास्ट 2 मिनट बचे हैं, वो होमवर्क दे देता हूँ. And what is that? Page number 54. Page number 54. 8 question. Sorry, 7 question. 8 question. Right? 7th question में क्या लिखा है? Write down the formula of sodium oxide. How will you write the formula for sodium oxide? Na2O. Right? 7th and 8th. Aluminium chloride. What is the formula for aluminium chloride? AlCl3. Sodium sulfide. सल्फेट एडी का T याद रखना. T आया तो मींस खाली एक ही एलिमेंट है. सोडियम सल्फाइड. ठीक है? Na2S. What about D magnesium hydroxide MgOH twice. Now इसमें क्या है? Write down the names of the compound represented by the following formula. Al2SO4 thrice. What is Al? Aluminium. What is SO4? Directly आ जाएगा आपको नाम. ये देखिए aluminium sulfate. सचिन तेंदुलकर. यहाँ पे ऐसा नहीं है. I'm just telling you अलग अलग नाम. विराट कोहली ऐसा करके आप लिखा है. Just आपको उसको मैच करना है बस. ठीक है? Let us see. For example, calcium chloride or Ca+2. ये देखिए calcium and chloride किधर है?
खाली वही चीज है, खाली आपको याद रखना है. Okay, the next one is what? K2SO4. What is K? K is potassium. Yes or no? इधर गया potassium. पोटेशियम इधर नहीं, हाँ इधर है. देखो पोटेशियम हम क्या दिया आपको? सल्फेट. सल्फेट कहाँ गया? अभी हम लोगों ने देखा SO4 यहाँ पे, पोटेशियम सल्फेट. सिंपल है. Am I right? तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 आपको लिखना है. देन क्वेश्चन नंबर इधर देखिए, पेज नंबर 7 क्वेश्चंस are read नोटबुक में. हाँ नोटबुक में फिर से लिखिए बिना देख के, फिर इधर देखिए. ओके, वर्कशीट में जाइए, पेज नंबर 659, पेज नंबर 59. ओके, 59 में क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. मार्क इट ओवर देयर, मार्क करो उधर. ठीक है, और इसके बाद आप आइए इधर. कौन सा? बस इतना ही है, फॉर्मूला बेस्ड इतना ही है. ठीक है ना? तो नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो नेक्स्ट टाइम दिस टॉपिक विल गेट ओवर. ओनली थिंग इज वन टेस्ट विल बी देयर ऑन दिस फॉर्मूला. ठीक है, इससे क्या आपको इजी पड़ेगा. ओके, विल स्टॉप ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच. उसी को बनना चाहिए. टीचर ने मुझे जानने की क्या सारा जब से उसी का हमने पोस्टर देखा है. मैं सामने स्टोरीज उसी की डाली. तुम्हारे पूरे स्कूल की स्टोरियां वही थी. उसको सबसे ज्यादा वो अपने बोल रहे हैं प्रतिभा मुझे प्रैक्टिस क्लास के जस्ट पहले कुछ था कॉलेज में लेकर डाल रहे हैं. शायद वीडियो देख पूरी हमारे काशों को निकालना चाहिए. एग्जैक्टली काशों इतनी अनोइंग मेरा क्लास में साथ. एक तो या नहीं होती या तो से पकड़ करती है या तो क्यों नहीं हो जाती उससे कुछ मिलना. बेकार से बेकार कुछ नहीं. एक बार आ रही है उसके साथ 5-7 ही क्लास में क्या होती है. अरे भाई कैसे उसको लोग पसंद कर लेते हैं. उसे देखो कौन है अब्दुल्ला क्या नाम है? जानती है. अरे भाई तू बकवास हो जानती है तू बकवास है. मेरा सर थोड़ा दबाना दुख रहा है. मैं सोने जाती हूँ. तेरे गला वालों प्लीज. अरे हाथ बंद छोड़ दो उसका. मेरा गला बैठाएगा. नहीं ना ठंडी पड़. फिंगरिंग करो आपके ऊपर कितनी पागल हुआ था वो. अनुष्का तो उम्र भी पागल है. सीखने का इसने बोल सीखा तूने कैसे. अरे तुम लोग के स्कूल में बोर्ड्स काउंट होते हैं. हाँ अरे कुछ बोर्ड्स काउंट होते हैं बाहर से होता है. एक चीज का किसने होती है. अरे टीचर जिसको ज्यादा पसंद करती है क्योंकि टीचर भी वोट करती है. हम लोग तो वोटिंग ही नहीं होता. अरे इस बार हमारी वोटिंग कैंसिल हो गई. कार्ड हो गया ना स्कूल में. तो वोटिंग कैंसिल हो गई. एक चुप रहे. तेरे में तो सभी सेलेक्ट हो जाते हैं. तेरा बड़ा काउंसिल है. हमारे में एक्चुअल कंपटीशन होता है. हाँ कितने लोग हैं हमारे पार्टी 10 लोग होते हैं. हमारे में 4 हाउसेस हैं. हर हाउस के 3 2 कितने 12 हुए.